आप देख रहे हैं एक ऑर्नामेंटल झाड़ी जट्रोफा इंटेजेरिमा, लाल रंग के फूल और इस पर तितलियों का बसेरा। एक तो मार्टल्ड माइग्रेंट है, किटॉप्सिलिया पायरेंथी, और तांता लगा हुआ है एक पाइनियर बटरफ्लाई सफ़ेद रंग की पाइनियर। उसके साथ ही ये हसीन लाल रंग के फूल जट्रोफा करकास, जो हम गांव के फेंस में देखते हैं और एज ए बायोडीजल प्लांट ग्रो भी करते हैं, वो तो जट्रोफा करकास है। लेकिन ये दूसरी स्पीशीज़ है, एक्जॉटिक है, लेकिन पार्क्स गार्डन्स में लगी हुई है। तो इसके बड़े हसीन डेकोरेटिव रेड कलर्ड फूल होते हैं। ये फूल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाइज़ को और बीज को। और इस झाड़ी पे आज के दिन हम 2 बटरफ्लाइज़ देख रहे हैं जो बहुत ही अट्रैक्ट हो रही हैं इनके फूलों की तरफ। एक है मार्टल्ड माइग्रेंट और दूसरी पाइनियर बटरफ्लाई। और उसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं एक और ऑर्नामेंटल ट्री जो इंट्रोड्यूस्ड है, जिसको लाल तून भी कहते हैं, जो गुलाबी तून, हालांकि तून तो नहीं है, टोना सिलिएटा को तून कहते हैं। ये है बेसिकली रेन ट्री कोल्डरुटेरिया बिपिन्नाटा। इसके पीले फूल होते हैं और इन्फ्लेटेड फ्रूट कैप्सूल्स रेड कलर की, लेकिन आप इसमें नीचे कुछ गोल्डन कलर के पिंक स्पॉटेड डेड स्पॉटेड फ्लावर्स भी देख पा रहे हैं। दे आर ग्रोइंग इन पैनिकल्स। सो दिस इज कोएलरेटेरिया बिपिन्नाटा। और कश्मीर में हम एक और स्पीशीज़ देखते हैं इसकी, जिसमें पिनेट लीव्स रहते हैं, और वो है कोएलरेटेरिया पैनिकुलेटा। लेकिन ये गुलाबी तून, जो लाल तून कहलाने वाला पेड़, सपेंडेसी परिवार का है और एक्जॉटिक है अगेन, ग्रोन फॉर इट्स पिंक कलर्ड इन्फ्लेटेड डेकोरेटिव कैप्सूल्स। लेकिन इसके ऊपर फूल भी आए हुए हैं और फूलों के साथ फ्रूट भी हमें दिख रहे हैं। तो एक तरफ तो झाड़ी है जट्रोफा इंटेजेरिमा की, जो तितलियों के लिए इसलिए बहुत ही एक अट्रैक्टिंग नेक्टर फोरेजिंग प्लांट साबित हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जो फ्रूटिंग कैप्सूल्स हैं बहुत ही डेकोरेटिव कोएलरेटेरिया बिपिन्नाटा के। ये स्क्वास्ट है, स्क्वास्ट का कैंपस शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आज 2 दिन की जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो है और इट्स इम्पैक्ट एंड रिस्क्स, उसके ऊपर जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसके बगल में ही हम इस कैंपस में देख पा रहे हैं ये खूबसूरत जट्रोफा इंटेजेरिमा एंड कोएलरेटेरिया बिपिन्नाटा। साथ में कुछ और बुशेस भी हैं, जैसे पंजतारा है, लेजिस्ट्रीमिया इंडिका, लेकिन इसकी फ्लावरिंग का इस वक्त कोई सीज़न नहीं है। तो फ्लावरिंग हम सिर्फ जट्रोफा में देख पा रहे हैं और कोएलरेटेरिया में। और कचनार भी है, लेकिन इसकी भी फ्रूट फ्लावरिंग का समय नहीं है। एक और प्लांट हम देख पा रहे हैं जिसमें कुछ हमें गोल्डन कलर के फ्लावर दिख रहे हैं। ये है केशिया ग्लाका या केशिया सोरेटेंस। ऐसे तो केशिया फेस्टुला भी है, लेकिन इसके फूल भी नहीं हैं। लेकिन पीछे आप देख पा रहे हैं टेम्पल ट्री, गुलचीन, गुलचंपा, द प्लूमेरिया एल्बा। और ये प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया है, जिसके ऊपर फ्रैग्रेंट फ्लावर्स जो हैं वो कुछ तो गिरे हुए हैं, काफ़ी महकदार, जिसको जहांगीर ने कहा था येलो सैफरान। इसको
ग्रेवयार्ड्स के ऊपर भी लगाया जाता है, तो इसको ग्रेवयार्ड ट्री भी कहते हैं, टेम्पल ट्री भी कहते हैं, पगोडा ट्री भी कहते हैं, sacred for Buddhists, Hindus and Muslims. So this is again introduced plant which is popularly known as gulichin, गुलचंपा, गुलेंची भी कह देते हैं कुछ लोग, संस्कृत में इसका नाम है क्षीर चंपा। तो ये फ्लावर्स का इसका गुच्छा है, जो सफ़ेद फ्लावर्स हैं, फ्रेगरेंट हैं, और शाम के वक्त, रात के वक्त माथ आके इसकी करता है पॉलिनेशन। तो आज के इस परिसर में हम देख पा रहे हैं अगर इक्का दुक्का फूल गुलेंची के, गुलचीन के, प्लूमेरिया क्यूटिफोलिया के, या फिर फूल देख पा रहे हैं हम कोएलरेटेरिया बिपिन्नाटा के, साथ में ही इन्फ्लेटेड पिंक रेड कैप्सूल्स भी हैं, और जट्रोफा इंटीजरीमा जिसके ऊपर मॉटल्ड इमाइग्रेंट एंड पाइनियर बटरफ्लाइज का तांता लगा हुआ है इस वक्त। वन ऑफ द रेप्यूटेड आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट इज पुनर्नबा, द हर्ब which rejuvenates and is popularly named in Dogari as it sit, in Hindi called as लाल सांठी या रक्त पुनर्नबा. In Jammu Shivaliks we are familiar with very common Borhavia diffusa, which is itasit. That species is very common. Its leaves are round and they are edible. Whole herb is a rejuvenating drug useful in liver diseases, eye diseases, blood purification, and is known to everybody. But here in SKUAST campus, SKUAST Chattha campus, today I am focusing or introducing another species of Borhavia, which is Borhavia chinensis. Mahapunarnaba. Punarnaba is smaller in size, which is also called as a red spiderling because of the red colored stems, but here that reddish tinge is missing. Mostly the stems are green and leaves are not round but they are egg shaped, they are ovate, typically ovate with acute apex, and leaves are much larger, rather double the size of Borhavia diffusa. So this is another species which is not that common. Earlier we located this species near 17 miles in Samba district, but today I could see this herb which is growing as a weed in the lawns of Sher Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology Chattha campus. This is Borhavia coccinea with large leaves and upright growth, and it is intermixed with Amaranthus viridis cholai, or in Dogri we call this plant as chaleri. So intermixed with the Borhavia chinensis is Amaranthus viridis. And another plant which is also very important medicinal plant is Buhiamli, Phyllanthus amaris, which is useful in urinary troubles. Another plant is
Euphorbia hirta, again useful in piles and against the dengue fever. This is the plant which has latex in its stem. If we pluck the leaf, it will ooze latex, so it is dudli, botanically identified as Euphorbia hirta. This is again medicinal plant. So in this small patch, we are also able to see the medicinal plants like Borravia chinensis, plenty growing along with Phyllanthus. Also we have Tridex procumbens, which also attracts butterflies. Even common grass yellow, Urema hicabi, is attracted towards the flowers of Tridex procumbens, which is again useful in blood clotting, wound healing. And this is also known as Cape daisy or tridentate daisy. And here on this trichodesma, Tridex procumbens, even hesperid butterfly Parnara is also seen sucking nectar. This is another beauty. So we must look toward these herbs not from the angle of human utility, but they are also supporting the population of many insects like butterflies. Hesperid butterfly is sipping some kind of forage from the composite of Tridex procumbens. We can see more butterflies in this evening time. All these hesperids, they usually visit flowers during evening time, and they are growing plenty here. So we can see the plants which grow in wilderness. They have therapeutic value, they have the edibility, and we need to identify them correctly. So this Borravia chinensis is unique plant, lesser known but rich source of iron. So it can be recommended as food for the persons who are suffering from anemia. This is useful in eye troubles, as a liver tonic. So all 5 parts, fruit, flower, stem, leaf, root, can be powdered, can be eaten. Even its leaves can be made into pakaudas. Even celery is very useful for the as a pot herb, useful for eye sight improvement. And apart from these naturally growing herbs, we have introduced exotics also. For example, this is a Hemilia pitens, which is not native to India but stands planted as ornamental bush, fire flame bush. Even some plants have invaded our areas. For example, alternanthera, this is also growing here. This is also exotic one. We have this Indian rubber fig tree, Ficus elastica, which is growing here, and it is also identified by its prop roots and its latex, which can be used as rubber. Although in India we have introduced Hevea brasiliensis as the rubber tree, and it is raised in plantations in Meghalaya, Tripura, down south Kerala. But this is our native
to northeast, Indian rubber tree, Ficus elastica. Its prop roots are usually trained for the village bridges in the northeast. We have 300 or 400 years old footbridges constructed by locals by weaving or interlocking the prop roots. Here it is introduced. We are also able to see one particular butterfly which is flying here. This is Urema hiccabi, golden one. And just I had a glimpse of line butterfly also, Papilio and pioneer butterfly again. Another plant which is very common under cultivation in Kashmir as well as in Jammu is Koelreuteria or burning cypress, which is called as Majan Ghas in Kashmiri language and used for broom making. This is cultivated as ornamental and also for making brooms. Another introduced plant is Rudbeckia hirta. This is a cone flower, and even on cone flower we are able to see Parnara butterfly, kind of hesperid butterfly on the bloom of Rudbeckia hirta. So this is the evening time, so most of the butterflies are hesperids only. During daytime we may be able to see papillionids, lycinids, whites and yellows, pyrids, but in the evening time mostly we are able to see the flats, and one is this hesperid brownish butterfly which is not colorful. This is usually seen during evening hours. So we are able to see the dense growth as wheat of Equisetum orvens here. The Equisetum orvens is popularly named as horsetail, and even we are able to see the cones, terminal strobilus is also developing, and earlier local people used to have its juice for building the body immunity, taking care of health. So Equisetum divile, Equisetum orvens, many species grow. In Punch area we see very tall Equisetum which is called as Equisetum ramosissimum, but in this water channel throat we are able to see the growth of dense growth of Equisetum orvens and Alternanthera philozeridis.